Students, today we enter into organic chemistry for 12th students. Plus 2 science second year or 12th syllabus ro organic chemistry start kariba. So, before starting discussion of individual chapters, first I would like to discuss with you the nature of organic chemistry. Most of the students कहती जे मो हाथ रे घोषा होनी तेणु ऑर्गेनिक हबनी, मु घोषी पारुनी तेणु ऑर्गेनिक भल हबनी, XYZ भल घोषी पारुची तेणु तार ऑर्गेनिक भल हब. शुण पिला माने मो निज एक्सपीरियंस मु कहूची घोषिले ऑर्गेनिक हबनी, घोषिबा को पड़िबो बट खूब कम. जब मैथमेटिक्स रे फिजिक्स रे भी घोषिबा को मन रखिबा को पड़ुची ना, फॉर्मूला इक्वेशन कॉन्सेप्ट्स, किंतु बुझिबा को पड़ुची चैप्टर गुड़ाक देन घोषुच. मैथ फिजिक्स पाठ गुड़ार कौन होची बुझिबा को पड़ुची पाठ गुड़ाक देन घोषिबा को पड़ुची मन रखा को पड़ुची. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी सेमती कॉन्सेप्ट्स बुझिबा को पड़िबो तापर टिके टिके मन रखा को पड़ो घोषिया को पड़िबो. सो कंक्लूजन मैथ रे जेमिति अंडरस्टैंडिंग आउ घोषा दुईटा जाक अच्छी, अंडरस्टैंडिंग बेसी घोषा कम. फिजिक्स रे जेमिति अंडरस्टैंडिंग बेसी घोषा कम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी सेमिति अंडरस्टैंडिंग बेसी और घोषा कम. कॉन्सेप्ट न बुझिकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री घोषिकी कहीं भी मन रखि परिबेनी, निश्चित भाव कन्फ्यूजन हम. तेणु कौन होची केमिति होची से कॉन्सेप्ट्स बुझीथिले मन रखिला बेले टिके हेल्पफुल हम. एंड आउ गोटे इंपोर्टेंट कथा पिला माने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रो all concepts are present in 11th or first year and all applications are present in 12th or second year. So केमिति डेंजर्स रे डिस्ट्रीब्यूशन हिची देखो, सब चाबी गुड़ा को रहिला फर्स्ट ईयर रे, सब ताला गुड़ा को रहिला सेकेंड ईयर रे. फर्स्ट ईयर रो जदि से चाबी गुड़ा को तमे न नै कि सेकेंड ईयर को आसीच ताले सेकेंड ईयर ताला गुड़ा को तमे खोली परिबोनी, घोषिया को चेष्टा करियो किछि हे परिबनी. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर परीक्षा रे हो किंबा एंट्रांस परीक्षा रे हो किंबा जदि रिसर्च करिवो से सब पई फर्स्ट ईयर रो किछि फंडामेंटल चैप्टर्स अछि, सेही चैप्टर्स सब जानिबा निहाती दरकार. कारण सेही चैप्टर रे सब चाबी गुडा को मिलिबो जा सहाय्य रे तमे सेकेंड ईयर रो ताला सब खोलिबो. सो कौन कौन से चैप्टर गुड़ा को मेनली इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेटिंग इफेक्ट, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, आइसोमेरिज्म. These 4 chapters of first year organic syllabus is very important and all the fundamental concepts are present there. Without these chapters second year organic chemistry पूरा अंधार रे बाड़ी बुलेला हाले लागिबो. सो माय रिक्वेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स यही 4टा चैप्टर रे निजर फंडा को पूरा स्ट्रांग कर दियो. इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेटिंग इफेक्ट, ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड आइसोमेरिज्म. दीज 4 चैप्टर्स रे मो सब वीडियो बनैछि, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करिछि. ट्रू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स भलरे एक्सप्लेन करिछि. बट पिला माने से गुडा को यूट्यूब रे पब्लिकली बा फ्रीली अवेलेबल नाही. एई जो 4टा चैप्टर मु कहली वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेटिंग इफेक्ट, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, आइसोमेरिज्म, एई 4टा चैप्टर यूट्यूब रे फ्री नाही. वेरी स्मॉल अमाउंट रखा हिची, से वेरी स्मॉल अमाउंट पे करिके तुमे आम सेंटर रे देखि परिबो बा थ्रू ऐप देखि परिबो. ओके, बट से गुड़ाक जदि परफेक्ट है न ताले सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक बा एंट्रांस ऑर्गेनिक रे किछि भल आशा करिबा दिन रे स्वप्न देखिला भली. आउ गोटे इंपोर्टेंट थिंग ऑर्गेनिक रे सेम रिएक्शन इज रिपीटेड इन 2, 3, 4 चैप्टर्स. सो बेसी घोषिबो बोली भाबन, लिमिटेड रिएक्शंस किछि घोषि के मन रखिले 3टा 4टा जगह रे सेम रिएक्शन टा रिपीट ही जाउछि. सो टोटल प्लस 2 साइंस लेवल रे सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रो
टोटाल नंबर ऑफ रिएक्शंस जदि आम खोजा 60 ରୁ 70 टा रिएक्शन बाहर प्लस टू साइंस सिलेबस प्लस टू साइंस CHSE CBSE बोर्ड एग्जाम मैक्सिमम 60 कि 70 टा रिएक्शन बाहर से ही चैप्टर से चैप्टर से चैप्टर डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से गुड़ा रिपीट ही आमको बहुत बड़ लगुच तेणु ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जे घुषा पड़ो यहाँ माइंड रू बाहर कर बुझ जो चारिटा फंडामेंटल चैप्टर कहली बुझ ये सब चैप्टर वेरी इजी लगे लेट अस स्टार्ट द चैप्टर हालोअल्केन एंड हालोअरेन chapter has two parts one is haloalkane other is haloarene let us start haloalkane haloalkane first पढ़िबा then haloarene पढ़िबा okay so haloalkane you remember haloalkane general formula is RX the common name is alkyl halide R is alkyl group X is halogen some examples are CH3Cl methyl chloride C2H5Cl ethyl chloride etc these haloalkanes are called as halogen derivative of alkane halogen derivative of alkane alkane ru गोटे हाइड्रोजन बाहर करके गोटे हालोजन लगाई alkane कौन alkane is RH रू हाइड्रोजन रिमूव करके हालोजन ऐड कले वी गेट RX alkyl halide or haloalkane so we say haloalkanes are halogen derivatives of alkane in common name we use alkyl halide ethyl chloride methyl bromide propyl fluoride etc for IPS name we use haloalkane it can be chloromethane it can be fluoroethane it can be bromopropane etc very easy naming okay then now we have to know about primary secondary and tertiary alkyl halide very important thing okay primary alkyl halide 1 degree secondary 2 degree tertiary 3 degree so primary secondary and tertiary alkyl halide बुझिया पई हमो जानिया पड़ियो प्राइमरी कार्बन एटम कौन सेकेंडरी कार्बन एटम कौन टर्शियरी कार्बन एटम कौन सॉल्यूशन फर्स्ट वी विल डिस्कस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन देन ऑटोमेटिकली वी कैन अंडरस्टैंड प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी alkyl halide what is primary carbon look at if carbon is attached to one alkyl group only then it is a primary carbon atom this carbon is attached to one alkyl group only एगुड़ा कौन थी एटी हाइड्रोजन थी एटी हाइड्रोजन थी एटी हालोजन रहा पड़ो सो दैट इट इज alkyl halide alkyl halide हेबाई एटी हालोजन लगे पड़ो कार्बन रो तीन साइड रु वन alkyl group attached हेले it is primary carbon and similarly halogen टा जदि primary carbon को लगी then that is primary alkyl halide 1 degree alkyl halide secondary carbon कौन ना if carbon 2 alkyl groups लगी they may be same or different other is hydrogen then the other is halogen if a carbon atom is attached to two alkyl groups which may be same or different then the carbon is called secondary carbon and the alkyl halide is secondary alkyl halide similarly if carbon is attached to three alkyl groups which may be same or different and to halogen then it is tertiary alkyl halide primary carbon secondary carbon tertiary carbon भीतर डिफरेंस टा देखो कार्बन 1 alkyl ग्रुप को लगिले प्राइमरी कार्बन कार्बन 2 alkyl ग्रुप को अटैच हेले सेकेंडरी कार्बन
कार्बन 3 अल्काइल ग्रुप को अटैच हेले टर्शियरी कार्बन एंड हालोजन प्राइमरी कार्बन को अटैच हेले प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हालोजन सेकेंडरी कार्बन को अटैच हेले सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हालोजन टर्शियरी कार्बन को अटैच हेले टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. This is the general representation of primary, secondary and tertiary alkyl halide. Now let us draw some particular examples of primary, secondary and tertiary alkyl halides. Look at first I am drawing CH3 CH CH2Br and this is H. This is an alkyl halide. Okay. Now if I am spread करके लिखिबा कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ब्रोमीन here this carbon पुनी गोटे हाइड्रोजन को लागिछि here this carbon तीनटा हाइड्रोजन को लागिछि. ओके स्ट्रक्चर टाको एक्सपेंड करके लिखले एमती हला. ना ब्रोमीन जो ए कार्बन आटम को लागिछि ए कार्बन आटम प्राइमरी ना सेकेंडरी ना टर्शियरी. लुक एट दिस कार्बन आटम को ब्रोमीन लागिला हाइड्रोजन लागिला दिस बॉन्ड रे कोन लागिछि ए पूराटा लागिछि बोली कहबी. दिस बॉन्ड रे कोन लागिछि माने ए पूराटा लागिछि बोली कहबी. ना ए पूराटा होछ गोटे अल्काइल ग्रुप देखो C2H5. So this is an alkyl group. So this is a primary carbon. So this is primary alkyl halide. Similarly, we can draw secondary alkyl halide. Okay, that is CHBr. Okay, then CH3 CH3. Okay, now expand this C hydrogen bromine CH3 CH3. Now bromine is attached to this carbon and this carbon is attached to two alkyl groups CH3 and CH3. So this is a secondary carbon and this is a secondary alkyl halide. These two may be same or different. Similarly, tertiary alkyl halide draw कले कोन हबो कार्बन ब्रोमीन आपको CH3 लगला आपको C2H5 लगला आपको CH3 लगला. Now look at this carbon bromine को लगला बाकी तीनटा alkyl group को लगी छे. They may be same or different. So this is a tertiary carbon and this is a tertiary alkyl halide. So एठी तमे माने बुझिला पिला माने प्राइमरी कार्बन आटम कोन सेकेंडरी कार्बन आटम कोन टर्शियरी कार्बन आटम कोन एंड सेथरो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कोन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कोन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कोन. Very important. Okay, now we are entering into isomerism in alkyl halides. Just now mu कहउतली isomerism is a key. Okay, in first year syllabus. So माने पकाओ isomerism कथा isomerism वीडियो रो. तो isomerism in alkyl halides means alkyl halides can possess chain isomer, functional isomer, optical isomer. What is chain isomer? Chain isomer means same formula but different carbon chains. Look at primary, secondary alkyl halide तीनटा मु देखौछि बोर्ड ऊपर तीनटा जाको alkyl halide रो formula same but carbon chain गुडा को different arrange कराइछि. So they are chain isomers. Primary, secondary and tertiary alkyl halides having same formula will be chain isomers because formula same rochi chain da different hochi. Then come to position isomer or position isomerism. So position isomerism means functional group ro position ta change hi gale position isomer habo. For example, look at one example CH3 CH2 CH2 CH2Br. Okay, so this is one alkyl halide. Okay,
What is the alkyl halide? This C4H9Br. The formula is C4H9Br. And name we can say 1-bromobutane, because bromine is present here. Numbering starts from here 1, 2, 3, 4. So this is 1-bromobutane. Now I can bring the bromine here and take one hydrogen there. So what is the structure obtaining? CH2, CH, bromine comes here. So hydrogen automatically will remove here. Nachat carbon ro chapter adhika bond hejibo. So ethi bi gote hydrogen darkar bromine asila mane. This compound also have same formula C4H9Br, but name is different. This will be 1-bromobutane. This will be 2-bromobutane. So position of a functional group or position of halogen if change hochi, then they will be position isomer. Again look at, this is primary, this is secondary, because bromine ta ei carbon को लगी छी, ei carbon काहे लगिला, एपटे हाइड्रोजन को लगिला, एपटे हाइड्रोजन को लगिला, एपटे ब्रोमीन को लगिला, आ ei पटे अल्काइल ग्रुप टा को लगी छी. So this is a primary carbon, so this is primary alkyl halide. Now एठी bromine टा कोन छै carbon को लगी छी, ei carbon काहे लगी छी, गोटे हाइड्रोजन को लगी छी, गोटे ब्रोमीन को लगी छी, आ दिस साइड रे गोटे अल्काइल ग्रुप को लगी छी, दिस साइड रे आ गोटे अल्काइल ग्रुप को लगी छी. So this is secondary alkyl halide. Then come to optical isomerism or optical isomer in alkyl halides. माने पका पिला माने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन कंक्लूजन को है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रे, इफ ए सब्सटेंस हैज ए chiral carbon atom then it will be optical isomer. देखो पिला माने जो चारटा जिनस मु कहली इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेटिंग इफेक्ट, ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड आइसोमर, से गुडा जदी भला भाबे जानि न प्लीज से वीडियो सब देखि किरी परफेक्ट हे किरी आसो, नचेते पाठुडा बुझा भारी कष्ट. तो सही वीडियो रे कंक्लूजन आमे देइथिले ऑप्टिकल आइसोमर माने ए सब्सटेंस हैज टू पोजेस कायरल कार्बन एटम देन इट विल बी ऑप्टिकल आइसोमर. कायरल कार्बन एटम कोन ना, कार्बन एटम को लागिथिबा 4 बॉन्ड रे चारटा जाको ग्रुप डिफरेंट हेले इट इज कायरल कार्बन एटम. सो लुक एट, आई एम शोइंग यू कार्बन, तो एई पटे लागिला CH3, एई पटे लागिला हाइड्रोजन, एंड ए पटे लगिला C2H5 एंड एठी लगिला हालोजन और क्लोरीन. दिस इज ए कायरल कार्बन एटम बिकॉज कार्बन जो चारटा ग्रुप को अटैच होइछि दे आर टोटली डिफरेंट. सिमिलरली आर मिरर इमेज, एठी जदि गोटे मिरर रखिबी तो आर मिरर इमेज टा केमथि हबो. मिरर इमेज रे এই তো হেড আউ ফুট কিছু চেঞ্জ হোনি, মুন্ড বা পাদ মিরর ইমেজ রে কি চেঞ্জ হচ্ছে, যোটি সেটি রହୁଛି CH3 C2H5. নাও রাইটটা লেফট, লেফটটা রাইট, ল্যাটেরাল ইনভার্সন হচ্ছে. সো এঠিকে আসিব হাইড্রোজেন, এঠিকে আসিব ক্লোরিন. সো দে আর অপটিক্যাল আইসোমার টু ইচ अदर. We know isomerism video मन पकाओ, कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट थिले ऑप्टिकल आइसोमर हबो, एंड को माने ऑप्टिकल आइसोमर कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज आर ऑप्टिकल आइसोमर टू ईच अदर. सो दीज आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स टू ईच अदर. नाउ वी एंटर इनटू प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इन लैबोरेटरी. In laboratory, alkyl halide is prepared in various ways, number of ways, but we will discuss only those things essential in CHSE or CBSE board exam limited syllabus. Okay, so first preparation, first type of preparation of alkyl halide is halogenation of alkane. alkane को halogen सहित add कले alkyl halide prepare होगा. very easy reactions. Look at, take a alkane RH, add halogen, we will get alkyl halide or haloalkane.
प्लस 1x1 हाइड्रोजन मिसिकी फॉर्म हबो HX. This is the primary method of preparation of alkyl halide from alkane. Take an example, you will understand important thing. CH4 let reacts with chlorine. Suitable light is incidented. If light incidented, one chlorine removes one hydrogen from here. So here it takes place CH3Cl plus HCl. It is hydrogen remove hela, this chlorine sida misiki plus HCl hela. So CH3Cl tiyari hela, alkyl halide tiyari hela. Now this CH3Cl jodi again chlorine sahite react karibo, ताहेले दिस क्लोरीन कौन करिवो अगेन एथि गोटे हाइड्रोजन बाहर करिवो सेटा गोटे क्लोरीन लागिवो. सो कौन पाइबी CH2Cl2 पाइबी. बुझिपाला ना नहीं. क्लोरीन कौन करे ना एठि गोटे हाइड्रोजन रिमूव करके ता जगह ऑक्युपाई करे. सेमती दिस अल्काइल हैलाइड को भी जदी मो क्लोरीन से रिएक्ट करिवि, क्लोरीन एठि गोटे हाइड्रोजन रिमूव करिवो, CH2 हबो Cl2 हबो प्लस HCl प्रोड्यूस हबो. से जो हाइड्रोजन टा बाहर दिस क्लोरीन से रिएक्ट कर HCl प्रोड्यूस हम. एगेन आपको जदि मो क्लोरीन से पास करी कौन हम एगेन से हाइड्रोजन रिमूव कर CHCl3 हाइड्रोजन रिमूव कर जगह क्लोरीन लगे. जो हाइड्रोजन टा रिमूव सी दिस क्लोरीन सहित मिसिकी एगेन HCl हम. बुझिपार ना. क्लोरीन टा गोटे हाइड्रोजन रिमूव कला तेणु CH है निज साइड लगिगला तेणु Cl3 है. एठू जो हाइड्रोजन रिमूव दिस क्लोरीन सहित कंबाइन होकर HCl है. एगेन ये क्लोरीन सहित रिएक्ट करिवो कले क्लोरीन कौन करिवो दिस हाइड्रोजन को रिमूव करिवो. रिमूव कले ओनली C रहला एंड से सी क्लोरीन रही जिवो. सो CCl4 है प्लस HCl है. सो दिस रिएक्शन रे अल्केन रो all hydrogen remove हेबा पर्यंत reaction टा चलिबो and finally this is the product. Now this formation भितरे एई कंपाउंड को माने पका CHCl3. this compound रो ना होची chloroform and this is carbon tetrachloride. important compounds. In this method we can prepare alkyl halide from alkane with help of or by adding halogen. Now very interesting, if एठी iodine add करिबा कौन होची. look at if alkane रे iodine add करिबा normally एमिति होबो CH3I प्लस HI. क्लियरली रिएक्शन एमिति होबो. तो एठी टिके माने पकाओ HI हाइड्रोजन आयोडाइड इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. ओके तो आर कॉन्सेप्ट कहीं कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन अलग जगह में डिस्कशंस करछि. फॉर हियर रिमेंबर HI इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. सो HI कौन करिवो ना CH3I को रिड्यूस करिकी रिएक्शन टाकू रिवर्स भी करेबो. माने अल्केन आउ आयोडीन फॉर्म करिवो. बिगिनिंग रो अल्केन नेली आयोडीन नेली प्रोडक्ट साइड रे किछि नथिला. धीरे धीरे प्रोडक्ट तैयारी हे गला. तो HI जते बेले तैयारी हे जीवो HI रो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर जोगु से रिएक्शन टाकू बैकवर्ड को प्रोड्यूस करेबो, रिवर्सिबल करेबो. तेणु सबुतक अल्केन अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट हबो नाही. This is the problem when iodine is added to alkane. So iodination of alkane is difficult. Why iodination of alkane is difficult? Because hydrogen iodide HI is formed which is strongly reducing. So it makes the reaction backward. reaction टाको पछकू फेरेबो. सो फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज हैम्पेड. सो आयोडीनेशन ऑफ alkane is difficult. हाउ दिस डिफिकल्ट इज रिमूव्ड. आम जे चाहिबा डिफिकल्ट रिमूव करिया पे कोन करिबा ना एमिति गोटे केमिकल रिएजेंट ऐड करिबा जे HI टाको कंज्यूम कर जिवो, जे HI सहित रिएक्ट कर जिवो.
For example, if आमे iodic acid HiO3 ऐड करिबा ताहले ये हाइड्रोजन आयोडाइड सहित कंज्यूम कर जिवो, हाइड्रोजन आयोडाइड को रिएक्ट कर जिवो, हाइड्रोजन आयोडाइड को रिएक्ट करिकी आयोडीन प्रोड्यूस करिवो। सो जेहेतु हाइड्रोजन आयोडाइड टा रिएक्ट हेकरी आयोडीन प्रोड्यूस हो गला तेणु रिएक्शन टा बैक को फेरी परिबनी एपटे आयोडीन भी हमको मिलला। सो अल्केन ऐड कले रिएक्शन अल्काइल हैलाइड हमें पाई चलीथिबा। सो टू रिमूव दिस डिफिकल्टी वी ऐड आयोडिक एसिड विथ HI so that iodine is formed। जेहेतु HI कन्वर्ट्स टू आयोडीन तेणु रिएक्शन टा को बैक को नहीं पारे नहीं। सो आयोडीनेशन बिकम्स इजी। Okay, now pause the video and write the note. 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 Now preparation of alkyl halide from alkene. Very easy. If alkene reacts with halogen acids HCl, HBr, Hi, then we get alkyl halide. Very simple. Look at C double bond C, hydrogen, 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 hydrogen. So this is alkene. When this reacts with an halogen acid HBr, what happens? This dissociates H plus Br minus. Ionization heba pare they disturb this alkene. So a pi bond ta break हेकरी एठी गोटे बॉन्ड फ्री हबो, एठी गोटे बॉन्ड फ्री हबो, गोटे बॉन्ड रे गोटे हाइड्रोजन लागिवो आ गोटे बॉन्ड रे गोटे ब्रोमीन लागिवो। सो कोन हला दिस H प्लस एंड ब्रोमीन माइनस आयोनाइज हला। आयोनाइज हेबा परे से माने पाई बॉन्ड टा को ब्रेक करिवे। सो C भीतर गोटे सिग्मा बॉन्ड रहिला। नाउ एठी गोटे हाइड्रोजन लागितिला, एठी गोटे हाइड्रोजन लागितिला, पाई बॉन्ड टा ब्रेक हला माने एठी गोटे बॉन्ड बाहरिबो। सेमती एठी गोटे हाइड्रोजन लागितिला, एठी गोटे हाइड्रोजन लागितिला, पाई बॉन्ड टा ब्रेक हला माने एठी गोटे बॉन्ड बाहरिबो। नाउ H प्लस Br माइनस भितरु H गोटे बॉन्ड को अटैच हबो, Br आ गोटे बॉन्ड को अटैच हबो। सो कोन पाइले हमें C2H5Br पाइले। सो वी गेट अल्काइल हैलाइड। वेरी सिंपल। नाउ लुक एट दिस इज सिमेट्रिकल अल्केन। डबल बॉन्ड रो लेफ्ट साइड रे जहा अछि राइट साइड रे भी सेहा अछि। सो दिस इज सिमेट्रिकल अल्केन। इफ अनसिमेट्रिकल अल्केन हबो ताहेले एडिशन टा मार्कोनिकॉप्स रूल ओबे करिवो। माने पकाओ फंडामेंटल वीडियो गुडा को ऑर्गेनिक रिएक्शन वीडियो रे मार्कोनिकॉप्स रूल कथा मो डिस्कशन करछि। कोन को जे मार्कोनिकॉप्स रूल्स the positive part of the addendum will attach to that carbon atom which contain more number of hydrogen atoms and negative part of the addendum will join to that carbon atom which contain less number of hydrogen atoms. So now let us think about a unsymmetrical alkene. Okay, C double bond C सिंगल बॉन्ड C एटा अनसिमेट्रिकल अल्केन हला। डबल बॉन्ड रो राइट रे जहा लेफ्ट रे से लागी होबनी हाइड्रोजन गुडा को फिल अप करो। एठी गोटे हाइड्रोजन पाइबा, एठी गोटे हाइड्रोजन पाइबा, एठी गोटे सिंगल हाइड्रोजन पाइबा, एठी तीनटा हाइड्रोजन पाइबा। दिस इज द अल्केन। ओके C3H6। दिस इज द अल्केन C3H6। Now let this alkene reacts with HBr. Clearly this is an unsymmetrical alkene because double bond ro left side re C2H4 achi, right side re CH2 achi. So this is an unsymmetrical alkene. Unsymmetrical alkene re look at if
H टा एई पटे ऐड करिवि ब्रोमीन टा एई पटे ऐड करिवि जो कंपाउंड मिलिबो चेंज कर देले H टा एई पटे ऐड कर देले और ब्रोमीन टा एई पटे ऐड कर देले डिफरेंट कंपाउंड मिलिबो। देखा पिला माने सिमेट्रिकल अल्केन रे H टा एई पटे ऐड कली ब्रोमीन टा एई पटे ऐड कली जो कंपाउंड मिलिला इफ H टा को एठी ऐड करथांदे और ब्रोमीन टा को एठी ऐड करथांदे सही कंपाउंड ही मिलथांदा C2H5Br। बट अनसिमेट्रिकल अल्केन यदि हे जीवो ताहेले H टा को एठी ऐड करिवि ब्रोमीन को एठी ऐड करिवि जो कंपाउंड मिलिबो H को एपटे ऐड करिकि ब्रोमीन को एपटे ऐड कले आ गोटे डिफरेंट कंपाउंड मिलिबो। तेणु एठी कोन हबो हम गोटे भाबिया पड़ियो। सो मार्कोनिकप्स कोन कहउचंती पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल बी अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम व्हिच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स and negative part of the addendum will attach to that carbon atom which contain less number of hydrogen atoms. So now look at तो एक जो H बाहरला सेटा को कार्बन को लागिबो H और Br दिस कार्बन दिटा को लागिबे कारण ए पाई बॉन्ड टा ब्रेक हेले दिस कार्बन रो गोटे हाथ खोलिबो दिस कार्बन रो गोटे हाथ खोलिबो। सो सिचुएशन कोन हबो ए CH3 टा को CH3 लिखिली CH एठी पाई बॉन्ड टा ब्रेक हला सिंगल बॉन्ड हला एठी CH H अच्छी एठी गोटे बॉन्ड फ्री हला एठी गोटे बॉन्ड फ्री हला। लुक एट ए CH3 टा को CH3 लिखिली बॉन्ड CH लिखिली एठी भी CH2 बॉन्ड अछि तो एई पाई बॉन्ड टा जो ब्रेक हबो HBr आयोनाइज हेबा परे एई पाई बॉन्ड टा जे ब्रेक हबो एई कार्बन रो गोटे हैंड फ्री हला एई कार्बन रो गोटे हैंड फ्री हला। हैंड माने बॉन्ड मु बुझी आछि ओके। सो कार्बन रो चारटा बॉन्ड को मु कहि आछि कार्बन चारटा हाथ ओके। नाउ लुक एट दिस H और Br भितरु H टा पॉजिटिव एडेंडम ब्रोमीन टा होची नेगेटिव एडेंडम पॉजिटिव एडेंडम टा का को लागिवो इधर दिस कार्बन को लागिवो और दिस कार्बन को लागिवो। सो मार्कोनिकप्स रूल कहूची पॉजिटिव एडेंडम विल अटैच टू दैट कार्बन एटम व्हिच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। लुक एट दिस कार्बन एटम दुईटा हाइड्रोजन एटम को कैरी करची दिस कार्बन एटम गोटे हाइड्रोजन एटम को कैरी करची। अल्काइल ग्रुप भितर थिबा हाइड्रोजन एटम गुडा को कैलकुलेट करबनी जेतेबेले आमे देखिबा को कार्बन एटम केतरा हाइड्रोजन एटम कैरी करची सेतेबेले अल्काइल ग्रुप भितर थिबा हाइड्रोजन एटम को आमे काउंट करबा नाही आमे अल्काइल ग्रुप छाडी देगिरी डायरेक्ट हाइड्रोजन एटम ही काउंट करबा। सो दिस कार्बन कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम्स दिस कार्बन कंटेन 1 हाइड्रोजन एटम। सो हाइड्रोजन पार्ट टा आकु लागिवो ब्रोमीन पार्ट टा आकु लागिवो ओके। दिस इज द कंपाउंड। So in unsymmetrical alkene halogen acid को ऐड कले मार्कोनिकप्स रूल अनुसार जो प्रोडक्ट फॉर्म हबो दैट इज कॉल्ड मेजर प्रोडक्ट माने मैक्सिमम दिस प्रोडक्ट फॉर्म हबो। अदर प्रोडक्ट भी फॉर्म हे पारे CH CH3 CH अदर प्रोडक्ट कौन ब्रोमीन टा एठी लगी हाइड्रोजन एठी लगी अदर प्रोडक्ट सो एठी हाइड्रोजन लगी एठी ब्रोमीन हला एई प्रोडक्ट भी फॉर्म हे पारे बट दिस इज माइनर प्रोडक्ट माने वेरी लेस अमाउंट और वेरी लेस परसेंटेज फॉर्म हबो दिस प्रोडक्ट दैट इज मेजर प्रोडक्ट दिस इज माइनर प्रोडक्ट ओके। सो इफ unsymmetrical alkene reacts with halogen acids then we form a major product and a minor product. This Markovnikov's rule anusare this will be major product and this will be the minor product. Now pause the video and write the note. Now pause the video and write the note. Students, now preparation of alkyl halide from alcohol with help of Lucas reagent माने alcohol और Lucas reagent reaction रे alkyl halide prepare हुई। What is Lucas reagent? Look at एटा पुणी तमर गोटे नुआ सांग भेटिला Lucas reagent
आपको मन रख ये बहुत बार आ सहित देखा साक्षात हम सेकेंड ईयर पाठ पढ़ला बेले एंट्रांस पाठ पढ़ला बेले लुकास रिएजेंट बहुत थर यूज हम तेणु व्हाट इज लुकास रिएजेंट? लुकास रिएजेंट इज ए मिक्सचर ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2 and concentrated HCl. This is the Lucas reagent. This Lucas reagent alcohol सहित reaction हेले alkyl halide form हुए. And remember this reaction tertiary alcohol fast देखेबो माने स्पीड रे हबो माने टर्शियरी अल्कोहल जदि लुकास रिएजेंट सहित रिएक्ट करिवो अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन ता स्पीड हबो. प्राइमरी अल्कोहल जदि लुकास रिएजेंट सहित रिएक्ट करिवो देन रिएक्शन ता very स्लो हबो बा प्रैक्टिकली रिएक्शन हबोनी. So if alcohol reacts with Lucas reagent then alkyl halide is formed. In this reaction tertiary alcohol reacts speedily. Primary alcohol does not react speedily. Practically primary alcohol does not react with Lucas reagent to form alkyl halide. Okay, now reactions are very simple. Take a tertiary alcohol COH लगला here तीनटा R group लगी. This is a tertiary alcohol. If this tertiary alcohol pass through Lucas reagent that is anhydrous ZnCl2 and concentrated HCl कौन हबो this H this OH को नहीं कैसी की water form हबो and this OH जगह रे Cl लगी जीवो OH माइनस बाहर थीबो Cl माइनस एठी लगी जीवो. So compound कौन हबो CrRrCl. So this was a tertiary alcohol and this is tertiary alkyl halide. Okay. Similarly, if we take a secondary alcohol, we can get secondary alkyl halide. How? Look at carbon 2R group, 1 hydrogen and OH. This is a 2-degree alcohol. If we take this 2-degree alcohol, then we can get so what happens? This HCl H plus this OH को लेके वाटर कर जीवो एटी Cl लगी जीवो. So कौन पाइबा CrR and here it is H, here it is Cl plus water. Same style. Okay, H plus एटो जो OH माइनस रिमूव हैला H plus OH माइनस से रिएक्ट करी वाटर हैला. Now एटी जो OH माइनस रिमूव हिथिला ता जगह को Cl माइनस आसिला. So clearly 2-degree alcohol Lucas reagent से तो पास केले फॉर्म करुची 2-degree और secondary alkyl halide. Okay, similarly if you will take primary alcohol then also we can get a primary alkyl halide, but the reaction is very slow and we say the reaction does not take place. So conclusion is if you take primary alcohol pass through Lucas reagent then we write there is no reaction. Okay. Similarly, we can write the individual reactions also. These are general reactions लिखिली R जगह CH3 C2H5 CH3 एवं जदि किछ लिखिबी individual reaction हबो. individual reaction गुडा को देखो एमिथि हेछि individual reaction गुडा को R जगह different value पडिछि. So individual reaction गुडा को बोर्ड रे अछि देखो नोट रे भी देछि लिखिबो. This is the process in which alcohol reacts with Lucas reagent to form alkyl halide.
3 degree alcohol reacts speedily to form 3 degree alkyl halide. This reaction is very fast, this reaction is moderate, and this reaction is very slow. Practically we say no reaction. Now pause the video and write the note. Now pause the video and write the note. Now pause the video and write the note. Next is, also alcohol can form alkyl halide by reacting with PCl3, PCl2, SOCl2. PCl3 phosphorus trichloride, PCl5 phosphorus pentachloride, SOCl2 thionyl chloride. In all these reactions, chlorine react with alcohol to form alkyl halide. ए PCl3 हो कि PCl5 हो कि SOCl2 हो, से क्लोरीन टा जाइकी अल्कोहल सहित लागिकी अल्काइल हैलाइड फॉर्म करिवो. सो आपको आमे कहूछु क्लोरीनेशन ऑफ अल्कोहल. So if alcohol reacts with PCl5, PCl3, SOCl2, then corresponding alkyl halides are produced. Look at some reactions. CH3 CH2OH plus thionyl chloride SOCl2 कौन फॉर्म होगा क्लियरली CH3 CH2Cl. फर्स्ट अल्काइल हैलाइड मिलिबो. सो CH3 CH2Cl plus what are the byproducts formed here? The byproducts are SO2 and HCl. Along with alkyl halide, what are the byproducts formed here? SO2 and HCl. Okay. Now, similarly, CH3 CH2OH reacts with PCl5. So similarly, CH3 CH2Cl will be formed, but the other byproducts are CH3 CH2Cl. The other byproducts are POCl3, phosphoryl chloride and HCl. These byproducts we have to remember. Similarly, next is CH3 CH2OH plus PCl3 arrow mark. Similarly, say CH3 CH2Cl form haba, then plus POH thrice form haba plus HCl form haba. Okay, this POH thrice is phosphorus hydroxide कही परिबी, और this is also H3PO3. अब यदि लिखिबी, this is also H3PO3. If alcohol reacts with any one of SOCl2, PCl5, PCl3, then alkyl halide is formed and some byproducts are also formed. कौटी कौन बाई प्रोडक्ट्स मन रखा पड़ो ना. जदि क्वेश्चन मन रे आसुची एठी कहीं SO2, एठी कहीं POCl3, एठी कहीं POH थ्राइस, ताको जानिबा पे हमको रिएक्शन मेकानिज्म भीतर एंट्री करियो पड़ो. सुन पिला माने हमर +2 सिलेबस रे किछि रिएक्शन रो रिएक्शन मेकानिज्म अछि. सब रिएक्शन रो रिएक्शन मेकानिज्म सिलेबस रे नाही. तेणु आम जो रिएक्शन रो रिएक्शन मेकानिज्म सिलेबस रे रखी से रिएक्शन रो रिएक्शन मेकानिज्म डिस्कशन करवा, अन्य गुड़ाक डिस्कशन करवा नाही. देख ये गुड़ाक कहीं फॉर्म हो SO2 POCl3 POH3S केमिति फॉर्म है, कहीं फॉर्म है, आम रिएक्शन मेकानिज्म भितर गले जापर. सेमती जस्ट प्रीवियसली जो अल्कोहल रो लुकास रिएजेंट सहित रिएक्शन कहली, टर्शियरीटा बहुत स्पीडली रिएक्शन करिवो विथ लुकास रिएजेंट, प्राइमरीटा लुकास रिएजेंट सहित वेरी स्लोली रिएक्शन करिवो. आर जदि कारण खोजिया चाहिए से रिएक्शन मेकानिज्म भितर अच्छी. किंतु मो +2 साइंस सिलेबस रे जो रिएक्शन रो रिएक्शन मेकानिज्म सिलेबस कोर्स +2 साइंस बा CHSE बोर्ड एग्जाम रो देछि से गुडा को ही डिस्कशन करिवि. अन्य गुडा मेकानिज्म ये डिस्कशन हेनी. जेई नीट वीडियो रे सब डिस्कशन हम, किंतु यही वीडियो सीरीज
जिनिसटा +2 साइंस बोर्ड एग्जाम उद्दिष्ट रही तेणु +2 साइंस बोर्ड एग्जाम को लक्ष्य करके तेणु ये केवल से रिएक्शन मेकानिज्म डिस्कसन हम जो गुड़ाक +2 साइंस सिलेबस रे देछि। नाउ यही जो 3टा मेथड डिस्कसन कली आ भितर सब बेस्ट मेथड किए सब बेस्ट मेथड किए देखा देख ये जो प्रोडक्ट गुड़ाक फॉर्म है SO2 टा होची गैस एट रूम टेम्परेचर उड़ी जीवो HCl भी गैस एट रूम टेम्परेचर उड़ी जीवो बट POCl3 and H3PO3 they are liquid at room temperature। लैबोरेटरी रे ए दुईटा होची लिक्विड POCl3 एंड H3PO3 बट ए गुड़ाक होची गैस एट रूम टेम्परेचर। सो लुक एट फर्स्ट मेथड रे SO2 HCl गैस है कि उड़ी गला प्योर अल्काइल हैलाइड मिलला। सेकेंड मेथड रे केवल HCl गैस है कि उड़ी गला मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड POCl3 मिलला। थर्ड मेथड रे HCl गैस है कि उड़ी गला अल्काइल हैलाइड और H3PO3 रो मिक्सचर मिलला। सो को ऑटोमेटिकली जना पड़िला द फर्स्ट मेथड इज द बेस्ट मेथड बिकॉज प्योर अल्काइल हैलाइड इज obtained in this case। Okay, now pause the video and write the note। Also alkyl halide can be obtained from silver salt of fatty acid। Silver salt of fatty acid, that is silver salt of carboxylic acid। Look at carboxylic acid is RCOOH। Now silver salt of carboxylic acid बारे कौन हवा H बाहर की Ag लगिवो। This is silver salt of carboxylic acid। सोडियम सल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कौन हम ना H बाहर Na लगे दैट विल बी द सोडियम सल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली सिल्वर सल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड माने RCOOH। If silver salt of fatty acid reacts with bromine in presence of CCl4, look at CCl4 does not combine here, only bromine combine here। CCl4 is the non-polar medium required। So what are formed Ag को बाहर करिबो गोटे bromine, bromine रे एजी जगह नेगिरी फॉर्म हबो RBr plus CO2 रिवॉल्व हबो plus AgBr फॉर्म हबो। Look at silver salt of fatty acid reacts with bromine in presence of CCl4। केवल bromine टा रिएक्ट हबो टिके माने रखो bromine कोन करिवो 1 bromine 1 silver को नै कि AgBr फॉर्म करिवो एटु CO2 बाहर जिवो R सहित एटु जो 1 bromine बळिथिला मिसी की RBr हेबे। This is the alkyl halide। If we go to a particular reaction then CH3COOH plus bromine in presence of CCl4 then we get CH3Br methyl bromide plus CO2 plus AgBr। Okay, this is the method of obtaining alkyl halide from silver salt of fatty acid। And remember students, the name of this reaction is Hunsdicker reaction। ओके सुन पिला माने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भितर किछि रिएक्शन रो नेम आसीबो साइंटिस्ट मानकर नेम को धरिकरी रिएक्शन गुड़ाकर नेम कराई जाइछि। ए नेम रिएक्शन गुड़ाक वेरी 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 इंपोर्टेंट निश्चित भाव मन रखा पड़ो। दिस इज हंसडिकर रिएक्शन। ओके सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन to form alkyl bromide is Hunsdicker reaction। ना थिबा रिएक्शन जाको वेरी 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 इंपोर्टेंट मन रखियो पड़ो। एड मन रख नेमिंग रिएक्शन गुड़ा करे तमे चेंज कर दबनी। फॉर एग्जांपल एठी जदि तमे ब्रोमीन न करी क्लोरीन की आयोडीन कर दबो सेटा हंसडिकर हबनी कारण हंसडिकर रिएक्शन दा ब्रोमीन को नै करी करथिले तेणु आम हंसडिकर रे ब्रोमीन ही लिखा। हंसडिकर तुम चेंज करदेव हाँ ब्रोमीन सहित तो हो आयोडीन सहित भी हम क्लोरीन सहित भी हम एमती चेंज करदे हेनी। तेणु जहाँ सब बुक्रे अच्छी जहाँ सब आम कहूँ से सब बिना लॉजिक रे चेंज करदेवनी।
ओके आमर स्टेटमेंट को आमर नोट को परसिस्ट करिवो निज मन इच्छा एपट सेपट चेंज कर दबनी ओके सो लिसन पिला माने +2 साइंस सेकेंड ईयर और CBSE 12th सिलेबस रो जति की प्रिपरेशन देछि आमर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइलाइड सरला देन वी विल गो टू प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हाइलाइड Now pause the video and write the note.